Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. Market is super volatile. Nifty's valuation has slided below its 5 years average. Nifty की valuation जो है वो 15% down है from its October's high. Market में इतनी volatility क्यों है? हम इन्वेस्टर्स को ऐसे वॉलेटाइल मूवमेंट पे क्या करना चाहिए, ये सब जानते हैं ये वीडियो के थ्रू। मार्केट इज सुपर वॉलेटाइल। इसके कुछ रीज़न है, जैसे कि सप्लाई चेन जो ड्रास्टिकली इम्पैक्ट हुआ था कोविड की वजह से, वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एंड इन्फ्लेशन इज अबाउट टू टच इट्स 40 years हाई लेवल्स। एंड अगर आपने देखा रहेगा, काफ़ी ऐसे सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पे थे एंड इट हैज़ हिट ऑल टाइम लो। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ बैडली दिस मार्केट क्रैश इज एंड हाउ बैडली वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिसेशन। टेक कंपनीज की तो बात ही मत पूछो, टेक कंपनीज इतनी बुरी तरह से ब्लीड कर रही है। टेक कंपनीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एन इकोनॉमी एंड ग्लोब एज अ होल। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो it has reached all-time high at 78.08. US Fed has also signaled that they will be increasing interest rate by 0.75% to control inflation. And this increase in interest rate is highest since 1994. But how will this impact Indian economy? Whenever US increases the rate, there is a difference between interest rate which narrows down between two countries, and countries like India then offers less attractive currency trades. Increase in rate by US Fed also means that there is a lower growth in US market, which impacts globe as a whole. If there are higher returns in US debt market, that means equity market would be hampered very badly. Talking about Indian markets, demands are always controlled by central government using monetary policy, whereas supply side is controlled over and checked by government using fiscal measures. Not only RBI is taking up the steps to hype up the interest rate, but government as a whole is also trying to amend import duties and making the amendments to imports so that they can control the inflation. In 2013, when inflation was hovering in double digits, RBI increased repo rate and government also had some restrictions over imports of gold and other metals. A same situation was seen in 2018 as well. Post all these amendments done by government, stock market went up by almost 50% and almost 20% in the following years. Checking at the history, whenever there has been global cues and government tried tightening up the policies, the market came out to be positive. But this is not the situation every time, because during the great financial crisis, if government tries to combine fiscal policies with monetary policies, we can see that there had been debt crisis and high inflations later on. For instance, if we talk about European unions that faced a debt crisis in 2011, following which London Stock Exchange did take a U-turn and went into a bear market. So if we want to analyze how market will react, it depends on situation to situation. How market will go bearish or bullish will only depend on what your current situation is, what global crises are going on, and what global cues are. So we cannot predict how market will go up or down in near future. As an investor, you need not worry about recession. हम सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, यार मार्केट गिर रहा है, मार्केट इतने % डाउन है, मार्केट बेरिश चल रहा है, रिसेशन आ रहा है. बट नो, यू शुड नॉट वरी इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. इफ़ यू हैव रिसर्च प्रॉपरली एंड इन्वेस्टेड इन गुड स्टॉक्स, और इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड थ्रू गुड म्यूचुअल फंड्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मार्केट विल बाउंस बैक सम डे वेरी सून. So have a happy investing and keep averaging out whenever you get the opportunity. But just because market down it doesn't mean कि आप कोई भी stocks उठा लो, कोई भी penny stocks में डाल दो. No, do not go into a risky investment. Have a safe investment and diversify your portfolio and average out on good stocks. Thank you for watching out this video with so much of patience. Knowledgeable लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू. जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, पर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है?
क्या आप फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो? क्या आप अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल वाला बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो? क्या आप सीए, एलआईसी एजेंट, स्टॉक ब्रोकर, बैंकर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और आप अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो? तो आप वेल्दी के वेल्थ पार्टनर बन सकते हो, जहां पर आपको 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फुल ट्रेनिंग, फुल सपोर्ट और टाइमली पे आउट मिलेगा। तो सोचो मत, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ और ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, यहाँ पर आपको ₹1000 का बोनस अमाउंट भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट सेल इन द ऐप। सो थिंक वेल, गेट वेल्दी। थैंक यू।